Bismillahirrahmanirrahim. Let's share the point of the chapter which we have done. The Abbasid moved their point eastward to New City. The Abbasid were? The Abbasid moved their capital to eastwards to New City. Okay. Yes, Hamza? As the Abbasids rose to power and overcome the Umayyads, only one important member of their family, Abdul Rahman, escaped from Abu al-Abbas in 750. Okay. Miss, can I share? Okay. हुज़ैफ़ा अबान के बाद आप शेयर कीजिएगा. Okay. Cordoba's university was the largest and best of the Islamic world, and many people came to study there. Cordoba's University. Okay. Yes, Huzefa. One of the greatest mathematicians of all the time is Al-Khwarizmi, who invented algebra. ये कौन से चैप्टर का आप बता रहे हैं, कौन से पेज नंबर से बता रहे हैं, जरा ये बताइएगा. Chapter 211. We are studying chapter number 5, Muslim and Christian in Spain, page number 29. यहाँ से point share करने हैं बेटा. Miss, may I tell the next one? Yes, Masuma. Muslim Spain produced many learned men. For example, Ibn Rushd, the philosopher and medical writer, Ibn Khaldun, the geographer and social scientist, Al-Idrisi, the geographer, and Ibn Battuta, who lodged thousands of miles over the years in the famous travels and left behind interesting accounts. Okay. Ji, yes, Mirza Ahad Beg. Christians won control of the whole of Spain in the 16th century. Okay. What about Al-Andalus? What? Yes, there. The Umayyads employed and worked with Jews and Christians and allowed them to worship as they wished. Okay. Ji, Al-Andalus. What is Al-Andalus? It's on page number 29. Unmute yourself if you found the answer and share it. Can you repeat the question? Al-Andalus. What is Al-Andalus? Okay. The Arabic name for Muslim Spain was Al-Andalus. Good, very good, Mirza Ahad Beg. Excellent. Ji. So we are done with page number 29. Let's come on page number 30. The Christians' kingdoms in the north. Ji, let me know who can share the point. Unmute yourself. And Bibi Asra, have you raised the hand for sharing the point from page number 30? Yes, okay, beta, share it. For the first 300 years of Muslim rule, from the 8th to the 11th century, the three main groups in Spain, Muslims, Christians, and Jews, lived mostly at peace, though separately both in the towns and countryside. Okay, good. Yes. Hamza Adam ji, are you ready with your point from page number 30? Though Muslim generals had led their armies over the Pyrenees into France, they had never conquered the whole of Spain. Okay, good. Yes, Huzaima, can you share a point from page number 30? Thought Muslim generals had led their armies over the Pyrenees into France. They had never This conquered. point was already shared by Hamza Adam ji. Don't repeat the point. When you are sharing it from the book, you shouldn't repeat the point, okay? Listen carefully. Find out any another point. Yes, Amber, are you asking to share the point? Yes. Okay, share it. Christians were finally won control of the whole of Spain in the 16th century. Okay. G. Next, who is ready? Masuma, can you share one? अच्छा, Mirza Ahad Beg, I'll come to you. Ariz, Masuma के बाद आप point share करेंगे, okay?
फिर मोहम्मद अरीज के बाद मरियम हैदर। अब याद रखिए कि किस कहाँ तक का पॉइंट शेयर कर लिया है, उससे आगे का पॉइंट शेयर करना है। इट शुड बी लाइक अ स्टोरी। ओके जी। Miss, I have shared already. हाँ कोई बात नहीं, इस पेज से भी शेयर करो ना, कोई पॉइंट कहाँ तक शेयर किया है बच्चों ने। The Umayyad Caliphate had broken into smaller, less strong states. Alfonso was a tolerant king and might have created a kingdom in which Muslims and Christians could have lived together easily. Is it from page number 30? Yes, Miss. ठीक है जी। नेक्स्ट किसको कहा था? मोहम्मद अरीज को। Alcide or the Great Champion is one of Spain's heroes about whom many legends have been written in thousand century. राइट ठीक है जी। अलीजा। Christians who finally won control of the whole Spain in the 16th century, the Umayyads were very tolerant. From which page is this beta? 30. Okay जी। Aliza Faraz, are you ready? For the first 300 years of Muslim rule from the 18th to the 11th centuries, the three main groups in Spain, Muslims, Christians and Jews. ठीक है। Last paragraph of page number 30. I need a point from there. Fatma Nadeem, can you share one point? ओके मिर्जा अहद बेग, फातिमा नदीम के बाद आप पॉइंट शेयर कीजिएगा पेज नंबर 31 के फर्स्ट पैराग्राफ से। ओके On the Muslim side, Berber tribesmen from Africa came to Spain with the intention of turning back the Christian advance. ओके जी। मिर्जा अहद बेग। Another big push by the Christian kings took place in the 13th century. ओके अली शेख, मोहम्मद अली शेख एंड हमजा अहमद, गेट रेडी विद योर पॉइंट्स। पेज नंबर 31 फर्स्ट पैराग्राफ से आप दोनों पॉइंट शेयर करेंगे जी। हमजा अहमद, डू यू हैव योर बुक विद यू बेटा? ठीक है चलिए, पेज नंबर 31 फर्स्ट पैराग्राफ, शेयर अ पॉइंट। यस अली शेख फर्स्ट जी। अली शेख। जी जी बेटा शेयर कीजिए। There were many more Christian rulers were often quarreling. Okay, yes Hamza Ahmad. Abu Abdullah moved to the North Africa where many Muslims later followed him. Which page number and which paragraph? Page number 31, paragraph number 3, first one. Paragraph number 3. We are on paragraph number 1 beta. ठीक है ओके बीबी अस्रा कंटिन्यू। पैराग्राफ नंबर 1 की एंडिंग लाइंस में से कुछ भी एक पॉइंट बता दीजिए। King Alfonso VIII of Castile won a great victory over Muslims at Les Novas de Losa in 1212, after which the latter had little chance of winning back their losses. ठीक है जी। हमजा अहमद, आर यू रेडी विद योर पॉइंट? शेयर इट बेटा। Three great Arab cities fell to the Christians in 12 years: Corbuda in 1236, Valencia in 1238, and Silva in 1248. ठीक है ओके यस। अब्दुल सबूर, पेज नंबर 31 सेकंड पैराग्राफ, पॉइंट शेयर कीजिए। अब्दुल सबूर शेयर करेंगे, मोहम्मद अयान एंड कौन रह गया? खुजैमा सज्जाद। अरीज आपने शेयर नहीं किया पॉइंट? कर लिया ना, ठीक है पहले इनको शेयर करने दें, देन आफ्टर दैट इट विल बी योर टर्न अगेन।
चलिए, किसको कहा है? अब्दुल सबूर को कहा है ना? Unmute yourself, Abdul Sabur, and share the point, beta. जी, Abdul Sabur. Can you hear me, Abdul Sabur? Let's share a point, beta, from paragraph number 2. Starting की पहली 2 lines ही बोल दीजिए बेटा. क्या हुआ जब बाकी 3 countries इनके पास चली गई क्रिश्चियंस के बाद? फिर क्या हुआ? This just left Grenada, where in mountains country well defended with many castles. The Muslim rulers held out for another 250 years. Okay. Then what happened after the only Grenada was left? Next. Whose turn is this? It required all the strength of the Spain united under Ferdinand and the Aragon and the Seville of the castle to finally break the resistance of the last army of Grenada. रेजिस्टेंस ऑफ द लास्ट अमीर ऑफ ग्रेनेडा. ठीक है. मुस्लिम्स की बाकी सारी स्टेट्स तो ऑलरेडी वैसे ही स्पेन से इनके पास चली गई थी क्रिश्चियंस के पास. बट व्हाट हैपेंड दैट आफ्टर द 3 स्टेट्स द ग्रेनेडा वाज लेफ्ट. अब ग्रेनेडा से मुस्लिम्स को निकालने के लिए जो है इट टुक ऑलमोस्ट पूरे स्पेन की ताकत जो है उन्होंने लगा दी थी. और देन आफ्टर दैट द लास्ट अमीर ऑफ ग्रेनेडा लेफ्ट फ्रॉम स्पेन. ठीक है जी. इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. किसको कहा था मैंने नेक्स्ट? हयान के बाद खुजैमा आर यू विद अस? ओके. एनीवन एल्स हु कैन शेयर Yes, द miss. पॉइंट? ओके. यस खुजैमा, कंटिन्यू टू शेयर द पॉइंट बेटा. It requires all the strength of the Spain until under the frontier of the Arova and Isabella of the castle to finally break the resistance of the last Emir of Granada, Abu Abdullah, in 1492. ठीक है. नेक्स्ट अरीशा, आर यू विद अस बेटा? कैन यू शेयर अ पॉइंट? ओके. हफ्सा, कैन यू शेयर अ पॉइंट? Okay. Anyone who can share a point after this, unmute yourself and share the point. What happened after that? While Christian soldiers from northern Europe came to help the Spanish ruler, Abu Abdullah found all the requests for help turned down by these fellow Muslims. What happened कि अबू अब्दुल्ला ने जो है अपने मुस्लिम फ्रेंड से रिक्वेस्ट की टू हेल्प हिम आउट, बट किसी ने भी हेल्प नहीं की. देन व्हाट हैपेंड? अंबर के बाद मोहम्मद अलीज. ठीक है. देन मासूमा, देन मोहम्मद अली शेख, देन मोहम्मद हुजैफा. ओके. टर्न याद रखिएगा. फिर उसके बाद फातिमा नदीम, फिर बीबी असरा खोसो. चलो. यस अंबर. Muslims faced the full force of the Inquisition led by Cardinal Jamans. Abu ठीक है. Abdullah then moved to North Africa, where many Muslims later followed him. ठीक है. देन अबू अब्दुल्ला मूव टू नॉर्थ अफ्रीका. जी. नेक्स्ट. Ferdinand and Isabella saw their attack on Grenada as a crusade to expand Christianity at the expense of the Muslims and the Jews. Not only should Muslims rule in the Grenada, but Islam should disappear from Spain. Okay, so Islam disappeared from Spain after the last Amir of Abu Abdullah of Granada left the Spain. ठीक है. उसके बाद स्पेन में इस्लाम खत्म हो गया. जी. नेक्स्ट कंटिन्यू. किसकी टर्न थी? मासूमा की टर्न हो गई. अली शेख आपकी टर्न थी. जी.
Ali Sheikh, Islam to disappear from Spain, यहाँ तक पढ़ दिया ना इन्होंने. इसके बाद मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा सही से. ओके, आप मैसेज में लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए. ठीक है जी. नेक्स्ट किसको मैंने कहा था? When some Muslims rebel rather than convert to Christianity or leave their homes for a distant land, the Spanish army destroyed them and their towns and villages. क्या मतलब? Anyone who can explain this? Unmute yourself. It's an open opportunity. कोई अगर explain कर सकता है ये, क्योंकि I have explained this, तो आप unmute कीजिए और explain कीजिए. मिस क्या एक्सप्लेन करना है? जो बेटा इन्होंने रीडिंग की है ना इस चीज को, anyone who will not become Christian. ठीक है, लास्ट सेकंड पैराग्राफ की जो लास्ट 3-4 लाइंस हैं. देखो व्हाट हैपेंड कि अबू अब्दुल्ला जब वहां से चले गए ग्रेनाडा से, तो स्पेन से जो है इस्लाम एकदम ख़त्म होने को था. जब स्पेन से इस्लाम ख़त्म होने को था तो वहां पर क्या रह गए? जो मुस्लिम्स रह गए, ठीक है, उन पे क्या फोर्स किया गया था? इधर दे बिकम क्रिश्चियन और दे विल लीव, दे हैव टू लीव द स्पेन. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? फिर अब उसके बाद क्या हुआ था फाइनली इन 16? हाँ बिल्कुल, शेयर कीजिए बेटा. Then Miss, first, then Miss Christians after some time Christians said that the Muslims who have converted to Islam. Christianity will also not be accepted in Spain because they can be loyal to Yes, Christians excellent. and Spain. Excellent work, excellent work. What happened? कि कुछ जो क्रिश्चियंस, जो मुस्लिम्स वहाँ रह गए थे, they converted to Christianity, but कुछ अरसे के बाद क्या हुआ? What happened? That they told that now those who have converted to Christian, they are also not loyal. हम उन पे भी भरोसा नहीं कर सकते, तो उनको भी स्पेन से जो है वो निकलना पड़ेगा. ठीक है. So some of them have took the keys of their homes, ताकि जो है हम कभी वापस आए तो हम दोबारा अपने घरों को देख सकें. याद है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना सारा, राइट? चलिए जी. द इंक्विजिशन, व्हाट हैपेंड इन ऑन पेज नंबर 32. मरियम हैदर, कैन यू शेयर एनी पॉइंट फ्रॉम द इंक्विजिशन? The Spanish Inquisition was the Christian crunch at its most cruel. जी. Anyone else? Yes, Hamza Ahmad. In the 30th century, the Pope in Rome had formed an organization known as the Inquisition. Known as the Inquisition as? To ensure that everyone in Christian country followed the teaching of the church decided by the papacy. By the papacy. Okay. Now what happened? Inquisition is that it's a kind of organization in which there are rules settled for the Christianity, के that अगर कोई Christian नहीं बन रहा, then we have to kill them. ठीक है, यानी हर एक को Christian बनना लाजमी है. The Christians must follow the rules settled by or set by the Inquisition और the papacy. जो भी उन्होंने चर्च के, जो उन्होंने फादर ने रूल सेट कर दिए, उस पे ही सबको फॉलो करना होगा. ठीक है जी. मिर्जा अहद बेग, आर यू विद अस? कैन यू शेयर एनी पॉइंट? अयान अहमद, हफ्सा, माहद, कोई पॉइंट नहीं शेयर किया अभी तक? मिर्जा अहद ने स्टार्टिंग में किया था. नाउ पेज नंबर 32 में से कोई पॉइंट शेयर कीजिए. इसके बाद क्या हुआ? The Spain Inquisition was the Christian crunch and it is most cruel.
and it is most cruel. Very good. Yes, Bibi Asra. अच्छा, बीबी असरा के बाद फातिमा नदीम. I think so. There is some problem in Bibi Asra's internet. Yes, Fatma Nadeem, you continue. She will join us. Cardinal Torquemada led the attack on the Jews. Either they must become Christians or leave Spain. Okay. Then what happened? Who is going to share next point? Ali Sheikh. Sure, beta. Miss Then Ji. it was the Ferdinand turn of Muslim. Yes, Ali Sheikh. Ferdinand Inquisition first then against the Muslim. Okay. Next, Hamza Ahmad, can you share a point? Perhaps they burned 200 people because for refusing to give up their faith. 2000 people, beta, not 2000. 200. Yes, Mariam. Ji, chaliye. Next, what happened that approximately 2000 people were burnt. कि ताकि अगर if you are not becoming Muslims then sorry not becoming Christian then we are going to burn you, और तकरीबन 2000 लोगों को उन्होंने जला दिया था. जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? अरीज. Then it was turn of the Muslims when Ferdinand and Isabella accept the surrender of Granada. तो फिर surrender of They Granada के बाद they promised that Muslims could keep their land and their religion. ठीक है. मोहम्मद अयान, फिर क्या हुआ? However, 7 years later, Muslims faced to face the full force of the integration, led the Cardinal Jimenez de Senoras. Some revolted and were killed or made slaves, and many others fled to North Africa, never to see their home again. ठीक है. एक फुल फोर्स आई फिर उसके बाद और उन्होंने जो है ट्राई किया कि जो जितने बाकी मुस्लिम्स रह गए हैं उनको भी हम तकरीबन ख़त्म कर दें. ठीक है. देन व्हाट हैपेंड? इजाबेला एंड फर्डिनेंड दे हैव प्रॉमिस कि ठीक है उन्होंने जो places which they have taken under their control, they have promised that the Muslim can keep their lands and they can live according to their own religion, but after the Pope have told them that no, you cannot do this, तो फिर वो भी अपना promise, Isabella and Ferdinand अपना promise पूरा नहीं कर सके. ठीक है. Then what happened? That some revolted and some were killed और slaves बना लिया उनको, और कुछ जो है वो वापस नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चले गए, विश के दोबारा कभी भी वो अपना घर नहीं देख सकेंगे. ठीक है. So this was all about the Muslims and Christians in Spain. It was a revision so that you can एक स्टोरी की सूरत में जो है वो हम इसको रिवाइज कर लें. ठीक है. So I think so this was all for today's class. ठीक है. If you have